ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायाम् अथ विंशोऽध्याय। व्यासुवाच सनत्कुमार सर्वज्ञ कथा तेषां वितादुता महाप्रभो शङ्करस्य यत्र लीला च पावनी इदानीं ब्रूहि सुकृत्या कृपां कृत्वा ममोपरि राहुर्मुक्त कुत्र गता पुरुषेण महामुने। श्रुत्वाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य व्यासस्यामित्तमेधस प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा ब्रह्मपुत्रो महामुनि। सनत्कुमार उवाच राहुर्विमुक्तो यस्तेन सोऽपि तद्वरस्थले अतः स वरवरो भूत इति भूमौ प्रथां गतः। तथा स मन्यमान स्वं पुनर्जन्यं स्थानत गद्गर्वो जगामाथ जलन्धरपुरं शने। जलन्धराय शोभयेत्य सर्वमीश विचेष्टितं कथ्यमास तच्चासा दव्यास दैत्यक्षराय वै। जलन्धरस्तु तच्छ्रुत्वा कोपाकुलितविग्रह बभूव बलवानी सन्धुपुत्रो दैत्येन्द्र सत्तमः। तथा कोपपराधीन मानसो दैत्यसत्तमः। उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। जलन्धरुवाच निर्गच्छन्तवखिला दैत्या कालनेमिमुखा खलु। तथा निशुम्भाद्या वीरा स्वबलसंयुता कोटिवीरकुलोत्पन्ना कम्बुवंश याक्ष दौर्भदा कालका कालकेयाक्ष मौर्या धौम्रास्तथैव च। इत्याज्ञापयासुरपति सिन्धुपुत्र प्रतापवान् निर्जगामाशु दैत्यानां कोटिभिः परिवारिता। ततस्तस्याग्रतशुक्रो राहुशिक्षन् शिरोऽभवत् मुटुक्षापतत् भूमौ वेगात् प्रस्खलितस्तदा व्यराजता नभापूर्णं प्रावेशिव यथा घने। जाताश्कुना भूरि महानिन्द्राविसूचका तस्योद्योगं तथा दृष्ट्वा गीर्वाणास्ते सवासवा अलक्षितास्तदा जग्मु कैलासं शङ्करालयम्। तत्र गत्वा शिवं दृष्ट्वा सुप्रणम्य सवासवा दिवा सर्वे नतस्कन्धा करोपद्धत्वा च तुष्टुः। देवा ऊचु देवदेव महादेव करुणाकर शङ्कर नमस्तेस्तु महेशान पाहि न शरणागतान्। विह्वलावयमत्युग्रं जलन्धरकृतात् प्रभो पुत्रवात स देवेन्द्रास्थानभ्रष्टा क्षितिस्तथा न जानासि कथं स्वाम्यन् देवापतिमिमा प्रभो। तस्मानो रक्षणार्थाय जहि सागर नन्दनम् अस्माकं रक्षणार्थाय यत्पूर्वं गरुडध्वज नियोजितस्तवया नाथ न क्षमा सौद्य रक्षितुं तद्धिनुग्रहतस्य रम्यया स तिष्ठति। वयं च तत्र तिष्ठामस्तद्याज्ञावशगासुरा अलक्षिता वयं चात्रागता शम्भो वदन्तिकं स आयाति त्वया कर्तुं रणं सिन्धुसुतो बली। अतः स्वामिन्नरणे त्वं तं विलम्भं जलन्धरं हन्तुर्महसि सर्वज्ञ पाहि न शरणागतान्। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा ते सुरा सर्वे प्रभुं नत्वा सवासवा आदौ निरीक्ष सन्तुस्तुर्महेशस्य विनम्रका। इति देववचा श्रुत्वा प्रहस्य वृषभध्वजा
द्रुतं विष्णुं समाहूय वचनं चेदं ब्रवीत्। ईश्वरुवाच ऋषिकेश महाविष्णु देवाक्षात् समागता जलन्धरकृता पीडा शरणं नेति विह्वला। जलन्धरा कथं विष्णु संगरेण हतस्त्वया तद्गृहं चापि यातोऽसि त्यक्त्वा वैकुण्ठमात्मना मया नियोजितसत्त्वं हि साधु संरक्षणाय च निग्रहाय खलानां च स्वतन्त्रेण विहारिणा। सनत्कुमारोवाच इत्याकर्ण्य महेशस्य वचनं गरुध्वज प्रत्युवाच विनीतात्मा नत्तकासाञ्जलिर्हरि। विष्णुर्वाच तवाशं सम्भवत्वाच भ्रातृवाच तथा श्रिय मया न निहतसङ्क्षेत्वमेनं जहि दानवं महाबलो महावीरो जेय सर्वदिवोकसाम् अन्येषां चापि देवेश सत्यमेतत् ब्रवीमयम् मया कृतो रणस्तेनं चिरं देवानिवृतेन वे मधुपायो न प्रवृत्तस्तसिमण्डान पुङ्गवे त्वत्पराक्रमतस्तुष्टो वरं ब्रूहि तयं खलु इति मद्वचनं श्रुत्वा स वव्रे वरमुत्तमम् मद्गिन्या मया सार्धं मद्गेहे ससुरो वसा मद्दीनो महाविष्णु इत्ययं तद्गृहं गता। सनत्कुमारोवाच इति विष्णोर्वच श्रुत्वा शङ्कर स महेश्वर विहस्योवाच सुप्रीत्या सद्यो भक्तवत्सला। महेश्वरोवाच हे विष्णु सुरवर्य त्वं शृणु मद्वाक्यमादरा जलन्धरं महादैत्यं हनिष्यामि न संशय स्वस्थानं गच्छ निर्भतो देवा गच्छन्तवपि ध्रुवम् निर्भया वीतसन्देहा हतं मत्वा सुराधिपम्। सनत्कुमारोवाच इति श्रुत्वा महेशस्य वचनं स रमापति स निर्जरो जगामाशु स्वस्थानं गत्संशया एतस्मिन्मन्तरे व्यास स दैत्येन्द्रोऽति विक्रम सनद्वैरसुरे सार्धं शैलप्रान्तं ययो बली कैलासं वरुधयाथ महत्या सेनया युता सन्तस्थो कालसङ्काश कुर्वसन्निरवं महान् अथ कोलाहलं श्रुत्वा दैत्यनादसमुद्रवं शुक्रोधाति महेशानो महालीलाकलान्तका समाधिदेशसङ्ख्या च स्वगन्नास महाबलान्नन्ध्यात्तिकान् महादेवो महोति कौतुकीहरा नन्दीभमुखसेना निमुखा सर्वे शिवागया गणाक्षसमन्धान्तयुधायातिवरान्विता अवतेरुवर्णा सर्वे कैलासक्रोध दुर्मदा भर्गन्तोरन् शब्दाक्षं महावीरारणाय हि तथा सम्भवद्युद्धं कैलासोपत्यकासुवे प्रमथाधिप दैत्यानां घोरं शास्त्रासङ्कुलं भेरिमृदङ्ग शङ्खोर्घर्णी स्वानेर्वार हर्षणे गजाक्षर यश शब्दैक्षनादिता भूवर्यकम्पता शक्तितोमरबाणो घैर्मुसले प्राशपट्टिशे व्यराजतनभापूर्णं मुक्ताभिर्संवृतं निजैतैर्नागाक्षे अतिबिभुर्व्यराजता वज्राहते पर्वत्रेन्द्र पूर्वमासीत संस्मृता प्रमथाहत दैत्यो घैर्दैत्याहतघनैस्तथा वसाश्रिङ्मासपङ्गा च भूरगम्या भक्तदा ब्रह्मथा हतदैत्योग्धान् भार्गव सञ्जीवयत् युध्य पुनः पुनः क्षैव मृत्सञ्जीवनी बलात् पृष्ट्वा व्याकुलितास्
तास्तु गणा सर्वे भयार्दिता शंशुसुर्वदेव देवाय सर्वे शुक्रविचेष्टितं तच्छ्रुत्वा भगवानुद्राक्षकार क्रोधमुन्वनं भयङ्करोऽतिरोद्रक्ष बभूव प्रज्वलं दिश अथ रुद्रमुखात् कृत्या बभूवातीव भीषणा तालजङ्घाधरी वक्त्रास्तनापीडितगुरुद्रोहा सायुधभूमि तरसा ससाद मुनिशतं विच्चचार महाभीमा भक्षन्ति महासुरान् तथा सारन्मध्ये हि जगाम गद्भिर्द्रुत्तम यत्रास्ते संवृतो दैत्यो वैरेन्द्र स हि भार्गवा स्वतेजसा नभो व्याप्य भूमि कृत्वा च सा मुने भार्गवं स्वभगे धृत्वा जगामान्तिर्धृता नभा विघ्रितं भार्गवं दृष्ट्वा दैत्यसैन्यगणास्तथा रम्लान् वदनायुधा निर्जग्मुर्युद्ध दुर्मुदा अथो भज्यत दैत्याना सेनागन्धयार्दिता वेगहता यद्प्रक्रीणाकृन् संहति भग्नागन्धया दैत्यसेना दृष्ट्वातिमीर्षिता निशुम्भशुम्भो सैन्यान्यो कालनेमिक्षुचुक्रुधु रयस्ते वारयामासुर्गणसेना महाबला मुचन्त शरवर्षाणि प्राविर्षीवबलाहता ततो दैत्यशरोखास्ते शल्भानामिवग्रजारुरुद्रुखं दिशा सर्वा गणसेनामकम्पयन् गणाशर्षतेर्भिन्रुधिर्रासारवर्षिणा वसन्तकिञ्चुकाभासा न प्रजानानुहि किञ्चन तथा प्रभङ्गन् सर्वफलं विलोक्य नन्दया दिल्लम्बोदरकार्तिकेया त्वरान्विता दैत्यवज्राणा प्रसन् निवारयामासुर्मर्शनासते। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पंचमे युद्धखण्डे जलन्धरवधोपाख्याने सामान्य गणासुर युद्धवर्णन नाम 20 अध्याय।